Hello, welcome back, all of you. Welcome back to my channel again. I hope you guys are doing well. So, as मैंने आज डिस्कोड में जो मैंने पोस्ट किया था, अगर इफ़ यू गाइस मेरे डिस्कोड सर्वर में हो तो अराउंड जस्ट लंदन ओपन होने के 15 मिनट्स बाद ही 15 या 10 मिनट्स के बाद ही मेरा फुल टीपी हिट हो गया। सी, मैंने ये मैसेज लिखा था, आई लव व्हेन दिस मैसेज कम, फुल टीपी हिट ऑलरेडी। आज जो कल का ट्रेड था, जो यस्टरडे का ट्रेड था, वो अराउंड हियर आई क्लोज 75% प्रॉफिट एंड आफ्टर दैट इट रिवर्स। सो उसका भी ब्रेकडाउन दूंगा मैं। और जो आज मैंने बिफोर लंदन ओपन फ्रैंकफर्ट के टाइम पे जो एंट्री की थी, बहुत ही स्मार्ट वे से वो एंट्री थी। तो उस एंट्री के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट आई वाज थिंकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर इफ़ यू फॉलो मी, सी क्या है ना, मैं बताता हूँ। अगर इफ यू गाइस फॉलो मी, आज M15 का अगर हम देखेंगे सिनेरियो, बिकॉज H4 और सब देख के कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने सुबह एग्जैक्टली अराउंड 12:23 PM को मैंने ये फोरकास्ट पोस्ट किया था। और मैंने इसके साथ साथ ये भी लिखा था, बिकॉज क्या है, JPB JPY पे टेंटेटिवली टेंटिवली मतलब सारे न्यूज़ेस हैं। तो मैं JPY पेयर्स को भी आज शायद ट्रेड नहीं करता, बिकॉज वो एग्जैक्ट टाइमिंग है नहीं पता अपने को कि वो कब है न्यूज़, राइट। बट एज यू ऑब्जर्व, यूरो USD के टाइम पे जस्ट लंदन ओपन होने के 15 मिनट में देर इज अ न्यूज़, एंड आफ्टर 15 मिनट्स देर इज अ न्यूज़, एंड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आफ्टर वन अराउंड हाफ एन आवर there is also news, matlab whole London session there was lots of news. And during 3 p.m. as well, there is a GBP somehow correlate with euro as well. So GBP भी न्यूज़ है। फिर उसके बाद 3:30 PM को भी मीडियम इम्पैक्ट, हालांकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को मैं इतना वो नहीं करता हूँ, बट इफ़ यू सी दिस सो मेनी रेड्स, राइट। तो ऊपर से फिर US डॉलर में भी 8:15 को 8 को न्यूज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब जब तक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा, डोंट ट्रेड। तो ऐसे ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था मॉर्निंग में, टू मैनी न्यूज़ ऑन यू टुडे ड्यूरिंग लंदन सेशन, सो अवॉइड ट्रेडिंग यूरो USD ड्यूरिंग दिस टाइम, मैंने बोला। और मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन भी की, अगर आप मेरा M15 का POI देखोगे, M15 स्विंग इज बुलिश, HTF इज ऑल्सो इंटरनल, मतलब HTF इज ऑल्सो इंटरनल, मतलब इंटरनल बुलिश, दैट्स फेज, बट फेज A2। हाँ, मतलब MTF और HTF दोनों बुलिश है, बट दोनों फेज A2 में आ रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियो बना दिए। मार्केट नीचे आके इधर से भी जा सकती थी, ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये एशियन ये इधर से भी जा सकती थी। बट यहाँ पे मैंने सारे सिनेरियो एक एक POI पे अच्छे से लिख दिया था। क्या लिखा था, सेकंड, लुकिंग फॉर फेज A2 लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया, बट इट इज लो प्रोबेबिलिटी, बिकॉज सी, हम लोग गुड एरिया वैल्यू से बाय करना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। बट समटाइम व्हेन द मार्केट मोमेंटम्स शोइंग यू, लाइक सी, अगर आप H4 को देखोगे, इफ यू सी द H4 सिनेरियो, I will show you H4 scenario first so that you can understand what I was thinking during that time. See, potentially after sweeping this one, there is nothing. If you observe here, it is all for this market to be liquidated. See, these all are just a what I say, these are all mitigated for me. See, you will understand exactly here what I am saying. This is for me, it is all it is all mitigated, right? If you observe clearly, if you see that bullish and then bearish momentum, and then after that market just sweep 30 to 40% of sweep, mitigated 30 to 40% of this range, and then come down and break this swing break of structure, right? So it, for me, it is mitigated, so there is nothing here to price to hold till up here, okay? तो ये मेरा एक सिनेरियो बन रहा था, दैट आई वाज थिंकिंग दैट टाइम। आई शो यू। हाँ, तो ये मैं सोच रहा था, आफ्टर स्वीपिंग दिस फ्रैक्टल लो एंड डिड द चॉर्ज प्लस इंटरनल ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, इंटरनल ऑर्डर फ्लो भी शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इंटरनल ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट
एच टी एफ इज हाई फेज इन फेज A2, तो अभी ये फेज A2 में है, फेज A2 में है, सॉरी गाइस, हाँ, सो ये अभी फेज A2 में है। सो ये लॉन्ग लॉन्ग की तरफ था, मतलब आई वाज थिंकिंग कि वो लाइव मतलब लॉन्ग ही जाएगा, देर इज नथिंग लेफ्ट साइड टू होल्ड टिल अप हियर। सो देर इज, मतलब जब भी एक, व्हाट आई से, एक सिंपल सी बात है, जब भी प्राइस अगर हायर टाइम फ्रेम में, इफ इट मोमेंटम इज सो स्ट्रांग, दे विल नॉट डू द पुल बैक दैट वी वांटेड, कभी नहीं मिलेगा वैसा पुल बैक। हमेशा ऐसा होगा कि प्राइस जाता रहेगा, आप सोचोगे कि दैट इट विल कम टू योर डिस्काउंटेड जोन, इट विल कम टू द गुड एरिया वैल्यू। I know कि good we have to wait till price come to our good area value, but sometime when there is a momentum is so strong, as you can see, observe here, and M15 swing, price just sweep and aggressively move up, like, right, aggressive upside. If you observe during New York and during Asia session, it's aggressively going upside only. So it might not give you that much pullback that you wanted, that price come till your discounted or till your good area of value. Okay, so here I was thinking that, but it can play out. See what I was written during 12:20 p.m., but it can play out. So I need strong liquidation sweep on one लिख रहा था, that is a percent here on M5 or here. Look for long to the follow current order flow. मतलब यहाँ मैं देखूंगा करंट ऑर्डर फ्लो फॉलो करने के लिए लॉन्ग के लिए, बट लुकिंग इज हाई, हाँ लुकिंग यहाँ पे क्या, looking long is high probability, but keep in mind that below is Asian low, so might use for fuel the upwards move. So मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था कि हाँ ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बट क्या है, ये लिक्विडिटी, ये एशियन लो है, दिस इज एशियन लो, सो मार्केट माइट फ्यूल दिस इंड्यूसमेंट एंड गो अप आफ्टर दैट। सो मैंने वही यहाँ पे लिखा, फ्यूल द अपवर्ड मूव्स, यहाँ से फ्यूल मतलब पेट्रोल लेने के बाद मार्केट कैन गो अपसाइड, राइट, बट फेज बी लॉन्ग इज हाई प्रोबेबिलिटी हियर, सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया लॉन्ग का यही, बिकॉज दिस इज कम अंडर good area value, it is come under discount, right, if you see this premium and discount zone. So sweep zone, or because is extreme plus sweep zone, and it has inducement as well, this is the sweep zone that we wanted, and it has inducement. So there is probability that market can come here tomorrow or today during New York session, but it is possible that if it is breaking this and this and come up till this year, then I will definitely will take for a long, because it's already take the inducement that market can use for fuel up. Okay, but what I was thinking during London, because see, I already told you guys, there is too many news, right, too many news, so I just wanted to go for a trade before 1:45 or before 1:45 p.m. After London open, it's might difficult for me to enter any kind of entry, so I just see the market and do accordingly. So during that time, I show you, market was here around, first I have to go to M15, right, so that, because without mitigation, we don't look for M5 or M1 for entries. Okay, must have mitigation first. So during that time, it's around 12 or 12:30, exactly 12:30 p.m. मतलब when the Frankfurt open before London, 1 hour before London, I see this momentum to the downside, and see what happened. देखो क्या होता है when there is no liquidity to the left side। देखो अगर सिंपल सी बात है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, हाँ, मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी जोन कौन सा बनता है, ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी जोन बनता है, राइट, this is become for me higher probability, not this one. Why I told, I will give you the example why this is not the high probability, because see here there is liquidity above. Okay, this is the liquidity.
that can market can use this liquidity and then come up. So this become, for me it's a very high probability inducement, so I can use this. But sometime what I say is that कि जब momentum इतना strong होता है, then the market will not come up till here. It can come here and go like what I say. It's like go Elon Musk rocket. Okay. So the thing is that when there is no lid to the left side, if you see, observe here, there is no inducement here for this POI. So what is in my plan? It has to be created to the right side. It has to create it, market has to create on the right, because if there is no liquidity to the left side, then the liquidity become the POI become a liquidity. It's as simple as that. When there is no liquidity to the left side, the POI is become a liquidity. So the thing is that if there is nothing, मेरे प्लान में सिंपल से अगर नहीं है तो it has to build up here. Okay, some kind of like, it has to sweep this one, then I have to look long. See, exactly, I wanted to see this. So this become a liquidity that I wanted. Okay, चाहे वो मुझे M5 में मिले, चाहे वो M1 में मिले, it has to be here right side, if it not in left side, for me to use this as my POI. But most probability हमेशा इस high probability area के लिए हम लोग को wait करना चाहिए. Okay, so exactly I was thinking here कि मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ. When the market come down, I see there is M5 lid here, but it is not the highest probability for me right away, because as you know, I will not take LC1 entry here because it is not a good area value. So here I need a stronger entry model for me. For me, a stronger model is, I will show you in my Notion dashboard. Where is that? Where is it exactly? Search करता हूँ Notion. So we'll understand what I show you in my Notion dashboard. Go to my setups for see, for LC1 I need a left side. See, for LC1 I need a left side lid. Okay, it is very aggressive entry model, so I don't want to use in phase A2 or this kind of scenario, because the price was not the ideal for me to look long. Okay, this is the lowest probability trade. I मैंने ये डिस्कोड पे भी ऑलरेडी इसको मैंने मेंशन किया था. अगर आई एम सो सॉरी, हाँ, इसे मैंने मेंशन किया था. सी, लुकिंग फॉर फेज ए टू लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया. दिस एरिया इज लो प्रोबेबिलिटी. ये लो प्रोबेबिलिटी था, तो लो प्रोबेबिलिटी में आई विल नॉट लुक फॉर aggressive entry model. I will look for the strongest entry model here. So the thing is that, see, so I will not look upon this one. I waited for LC2A to be occur. This is for me this LC2A, because if there is no lid to the left side, it has to be happen around the right side. So it must have do fractal charge and then break this, and then I will look for the long entry. Okay, so I was waiting for this one to be happen, but sometime everything, see, हमेशा we will not always wait for star to be aligned and go for a trade. हाँ, if you see, मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को कि that you have to wait little longer to see your entry model to be appear. But what happen exactly is that sometime हर स्टार अलाइन नहीं हो सकता ना हमारी एंट्री के लिए, तो वी हैव टू find some other way if the move is going on. So for me, CE model that is called, I guess I don't written here, but it is a CE model that is called continuation model that I use currently. I'll show you somewhere. It's continuation model. CE continuation model is somewhere into the gallery, I guess. Into my recap, order flow PBL. I guess some entry that I missed. No, entry. It's
it's just the continuation model, I guess, where I supposed to put it, I just forget about it, so no problem. So it has to be like, so for me, I wanted to see first, after liquidation of this lid, price must have break the imbalances and reverse to my direction. So see this, on M5 I see this bullish move, see that it is showing me that no brother, I will use this liquidity and I will go upside. It's showing, price is showing me that no, don't wait for LC2A to be occur. Okay, matlab aggressively telling me, see that, and it's break this imbalance. I'm telling you guys, study imbalance, study sufficient is insufficient price action, study what I say, uh, liquidity gap. It is very important. So I see this momentum, and I see this what I say, FPG break, and it's create new imbalances, right? So I have to enter, but as you know, M5 की गाड़ी already निकल चुकी है, M5 has already occurred. So how can I enter? So here my M1 comes in play. In M1 I have what I call, it's a continuation model. I will show you in my, there is good probability trades that I take. 2024, I guess it will appear here so that you understand. Summary, where is the CE 18 trade 33% return, enough, but it is high probability. मतलब ये इतना ठीक नहीं दिख रहा है, but फिर भी मेरे को जहाँ पर दिखता है कि this is for me become more high probability, I take that. So I will show you here exactly. After seeing that price did M15 FVG break with creating new imbalance downside and stopping upwards imbalances and breaking up side, right? So I will because यहाँ पर तो ट्रेन तो छूट चुकी थी, ट्रेन had just gone by. Okay, so what I come to M1 and I see the M1 boss. I see the order flow shift in my favor. First of all, order flow shift होना बहुत जरूरी है आपके फेवर में. Then I use my fib tool, which is 1.6 or something, and I triggered here, exactly here. But still I wanted to be so sure for this entry, because the thing is that, see, it is not a good area value trade, it is not the highest probability, I am in the low probability trade. Okay, so low probability trade में हमें करना क्या है, have to be like, what I say, have to be more and more aggressive for entries, more and more aggressive, but in a way of uh, backing me ups, right? तो यहाँ पर what happen is exactly that, after order flow shift in my favor, I use my fifth tool around 6.1 and I put it here, but still I did not put order, I still did not set any limit order here, exactly I did not set it. Okay, I just wait till market come up till here, see this momentum, it's coming down, it must have mitigate this, and now it did that. And after that I just wanted, what I see on M5, I wanted to see if this is on M1. If I see this imbalances is breaking, so I have to see this same thing happen, has to be here. So I create this M1 FPG here for market created, I set my order above here. Okay, so exactly here I set my order. If market wants to go up, it I set stop order here. I know my SL become very what I say, bigger, because if I'm taking M1 entry, you might find that my stop loss will be like 2 or 3 pip. No brother, I will not do that anymore. I do that before, but I not now, because I have to give some room for my for market to play out something, right? So
here exactly I set my stop order, and overall around here, that is a 2 hour trade minimum. It has to 2 hour till up here. Okay, I know sometime market can come here and go down upwards, but थोड़ा तो प्रेशर मिलके मार्केट जा ही सकती है. तो 2 आर इट्स मिनिमम हैज टू बी. उसके ऊपर जाता है देन इट्स गुड, बट M1 है तो आई हैव टू बी एग्रेसिव. प्लस ये लो एंट्री मॉडल है, लो एंट्री मॉडल, लो प्रोबेबिलिटी एरिया है. देन आई सेट स्टॉप ऑर्डर अबाउ हियर and I see just market to play out, and it's just ranging, and it's coming down and ranging. It's still not trigger me here because I said, see, wherever I put here the entry here, I use most of the time on my MT5. I give some kind of a gap here, so still market not triggered me in. So I just waited and see, this is the momentum that tag me in the stop order. Buy stop order trigger me here, exactly here. And what I did, I just don't do anything stupid. I just put it my SL here and TP here, and just waited to market to show me the way. Exactly around 1:15 p.m. it's triggered. And don't do stupid things here, right? Just wait till it's hit your full TP, and exactly happen this. See that. So वही मैं कह रहा हूँ, स्टडी एफपीजी, स्टडी प्राइस एक्शन, स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर, स्टडी लिक्विडिटी. जस्ट सिंपल एज दैट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो हमको करना, अगर हम करेंगे तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट मार्केट थ्रू, बिकॉज एफईजी इज क्रिएटेड along the way. It is showing that momentum to the upside is very 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 strong. मतलब ये it is showing so much pressure to the upside. कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार ये तो बहुत ऊपर गया. इफ यू आई इफ आई कैंसिल दिस वन, इट माइट इट गो टिल अप अराउंड 6 or 7 hour, I guess. It's go till up 7 almost 6.9 7 hour तक मार्केट यहाँ तक गई. और कुछ लोग बोलेंगे यार इतना अच्छा प्रॉफिट आपने लिया नहीं, यू हैव सेट अ ब्रेक इवन हियर सो दैट यू विल बी फ्री. मतलब अच्छा खासा एक ही ट्रेड में आपको मिलता है. नो नो ब्रदर, मैं ऐसा अब नहीं करता हूँ. आई विल लुक ऑलवेज फॉर माई 2 or 3 hour टिल अप हियर, सो दैट after breaking this, market can come down. So I don't want any profit to go away. So always uh, put your TP where price might reverse. Always put your TP where price can reverse. Okay, so around here I was thinking that it can come up here and go down. So 2 hour is enough. I catch around $500. I'm happy to take out the profit. So no issue. Slowly gain ही इस मार्केट में सक्सेस का राज है, जो समझने को बहुत टाइम लगता है सबको. People take so much time to understand this. So now uh, आफ्टर टेकिंग, मतलब अराउंड व्हाट आई से, टीपी मेरा हिट हो गया था ऑलमोस्ट अराउंड 1:41 p.m को, एग्जैक्टली 1:41 p.m. सो हियर एट माय चैट आई जस्ट पोस्टेड दिस फुल टीपी ट्रिगर हो गया था एग्जैक्टली. मैंने ये पोस्ट किया यहाँ पर, आई पोस्टेड हियर. सो हाँ गाइज, 97 मेंबर्स कम our discord group. So 100 का कोटा पूरा हो जाने दो, then we will start giving you live signals as well to this group, so that you can also catch these kind of moves, hefty moves. कुछ लोग अगर होते, अगर मैं लाइव सिग्नल भी इस ग्रुप पे डाला होता तो हो सकता माइट सम पीपल आर लाइक सेट ब्रेक इवन एंड लाइक कैचिंग सो मच RR. और ये आज का मेरा मोटिवेशन कोट है, मोटिवेशनल कोट. यू लूज अ ट्रेड, हाँ, फॉरवर्ड. यू विन अ ट्रेड, फॉरवर्ड. मतलब जीतो, आगे बढ़ो. लॉस करो, आगे बढ़ो. यू मेक अ मिस्टेक, फॉरवर्ड. कुछ गलती करे, फिर आगे बढ़ो. वन ट्रेड मीन्स नथिंग, 1000 ट्रेड मीन्स एवरीथिंग. कीप मूविंग फॉरवर्ड.
ये मंत्रा है, सिंपल ये मंत्रा है। ये मैंने आज सुबह डाला था आप लोगों के लिए। सो यही कीप कीप गोइंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे, बी बेटर 1% every day. That is our motive. Okay, that is our thing. So I hope you like the breakdown that I did, और अच्छा लगा होगा वो ट्रेड आइडिया, और आपको कुछ उससे सीखने मिला होगा। सो I'll do this to the internal now, and now this POI has done his job. So new is created, and as you already explained you in the recap, there is nothing, there is no liquidity left side, so it has to build on the right side. So I have to wait till market come up till here. So I need any kind of entry model here, LC1, LC2A, or what I say, CE or DCE entry, any kind of continuation entry I see, and I will go for the long as well. But it is become medium probability now. I know this was the low probability, but it has become medium because phase A2 can play out, because I say it's still not high probability, because as you know, after any kind of break of structure, market has to do a pullback. So it's kind of in a pullback phase. It can go up for a pullback phase, but till it happen, we don't know that. Till, so just we have to wait. Still we have three POIs for longs. Still there is three POIs, right? See, अगर कुछ लोग यहाँ एंट्री लगा के रखे हैं, then they are hoping that market can go till here, 10 hour 20 hour. No brother, no, don't do that, don't do stupid things, because market, there is a thing, market, there, what I say, initiation range and push, initiation range and push. मार्केट रेंज में चलती है, फिर एक पुश देती है, फिर एक पुल बैक देती है, फिर एक रेंज में चलती है, फिर एक पुश देती है। तो स्ट्रेट ही मार्केट नहीं जाती। अगर हमेशा मार्केट स्ट्रेट जाती तो किसी को भी एंट्री करने नहीं मिलता सही प्राइस पे। सिंपल इज दैट। इफ यू सी रिसेंटली देयर इज अ ट्रम्प कॉइन, राइट? ट्रम्प कॉइन में क्या हुआ? if people catch around, a bottom, if people starting when the Trump tweeted about this, if people catch that time around, before it hit a dollar, if people catch in pennies and price go till up $75, that means they people making so hell of a money, so many people become millionaires overnight. Okay, so the thing is that if some people catch around 60 or 70, around 50, they are not making that much money. If people make, if around $50, when the Trump coin is around $50 and people invested, what I say, invest $500 around 50, and it's go up till 75, then how much money they'll make? They make only two, around, what I say, 25%. That means 25 to $50, I guess. Simple. If it's go around 75, right? So they make only 20 to 200 of 200 or 400 profit. If it is go till 100, that means they will make 500 extra. So now they are not making that much money, but if people buying from pennies, they make billions of millions of dollars, right? So the thing is that market has to give a pullback, right? It has to come up till 30 $20 or $10. So that, where the real, what I say, the real people can buy, like hedge funds, and they're always waiting for price to be come down to the good area value. So always wait for this to be happen, then go for any kind of entry, any kind of investment, I must say. Because जब एक मोमेंटम आता है ना, तो उस गाड़ी में चढ़ना तो लाइक बहुत खराब है। अगर चढ़ भी जाओगे 60-70 की प्राइस में, अगर किसी ने खरीद भी लिया था, तो उसके लिए निकलना कितना बुरा बुरा हो गया होगा। मतलब वो पेन इन द एस होगा उनके, कि वो निकल ही नहीं पाए होंगे अगर वो 60 पे 65 पे खरीदे होंगे। नाउ इट्स रेंज अराउंड, व्हाट आई से, ट्रम्प कॉइन इज रेंजिंग अराउंड 30 or 40 डॉलर। आई डोंट सी दैट, राइट, अभी इस वक्त। सो तो वो उतना ही चल रहा है। तो जब उतना चल रहा है, तो हाउ पीपल कैन मेक, if I have a dex scanner, I supposed to show you
just a second. There is, I guess there is nothing here. I'll show you in the dex scanner. Dex, dex scanner. Currently, Trump coin range. Where is Trump coin? It's not in the highest. What I say? Trump. It's ranging around $33. See, तो जब वो अपने पीक पे था, इस मोमेंटम पे था अराउंड 50 60 $60 $65, यहाँ पे जिसने बाई किया वो सोच रहा होगा ना कुछ अच्छा जाएगा, बट जिसने यहाँ बाई किया था उसकी तो मतलब निकल पड़ी। अब तो ये पेन इन द एस बन गया सबके लिए, राइट? तो वही है, जस्ट कि ऑलवेज मार्केट जब तक अपनी एरिया वैल्यू में नहीं आता है तब तक बाय नहीं कर सकते, बट एग्रेसिव मूवमेंट है, there is giving you some kind of good value, you can take, but you have to take out as early as possible to the next high. Do not know, we don't know because we have not the, what I say, we have not the future predictors, so हम लोग को नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो सम पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ इस हाई तक ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट? मुझे क्या पता था कि वो इतना हाई जाएगा, इतना हाई जाता तो आई मेक मोर मनी, राइट? Around if I make 500 from 2 hours, so that around 1000, around definitely I make, if it's goes 6 hours I make $1500 from this trade only. Okay, so no problem, no problemo. So we will wait till it's come to our good way area value. आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, अक्सर मेरी आवाज़ गड़बड़ा जाती है। अच्छा खासा टाइम हो चुका है, गेस स्टार्टेड अराउंड 10 10 12 एंड इट्स 30 30 20 मिनट्स। सो मैं घर पर हूँ, और आज फ्राइडे था, प्रेयर्स थे और फिर थोड़े काम थे, तो आई डिड नॉट गो। सो आई एम एट होम राइट नाउ एंड आई कैच अ वेरी गुड मूव अर्ली बिफोर लंडन, सो नथिंग टू डू, कुछ खास था नहीं करने को, घर पे भी मेकिंग KFCs, मतलब एट होम मज़ा आता है, कभी कभी किचन में भी जाना चाहिए घर पे। सो GBP JPY, if I see it's going, I don't know why it's going upside, but because I was waiting to break this one, but instead of breaking this, it break internal strong. So now it's completely bullish, and it has to now, it has to break this one, because it did not achieve to break this, so it has to go now. This is the price, this is the way I traded side, right? So now it is bullish for me, and the good area value is this, these both these two POIs for me. So in GBP JPY, I'm waiting. I was bullish. I am bullish on GBP JPY, but at least it need to come till here. For that, I know it can come, या यहाँ से भी ट्रेड ले सकता हूँ। नो, वो स्टूपिड चीज़ें छोड़ दो, मत करो वो स्टूपिड चीज़ें, यार अरे यार मार्केट यहाँ पे तो ऐसा ऐसा करके आएगी ना, यहीं के लिए वेट कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, नहीं माय ब्रदर, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से सेल करोगे यहाँ तक आएगी मार्केट, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये मार्केट है, ये अचानक से इधर से भी बुलिश हो जाएगी, मतलब तुम सोचोगे यहाँ पे कुछ 2 आवर्स 1 आवर और 1.5 आवर का प्रॉफिट दिखेगा आपको, अगर बुक कर सको, इफ यू आर दैट एग्रेसिव, और इफ यू टेक M1 एंट्री, यू माइट कैच सम गुड RR, बट क्या होगा, सडनली मार्केट यहीं से पुश कर देगा और आपका SL हिट हो जाएगा। बट अगर इफ यू कैच दिस, इफ यू कैच हियर, then there is high probability that you can hold till up here. Always look for good area value. That is the thing, that is trading, I must say, this is trading.
लिक्विडिटी तो हमेशा देखना है, लिक्विडिटी के बिना मार्केट मूव नहीं करता है। बि- बिफ- मतलब चाहिए चाहिए, बिकॉज इफ अ बिग प्लेयर wants to put a high amount, because see, we have, as a retail trader, we just have, like what I say, max to max we can have $1 million account, right? We can $1 million, but for the percentage point of view, we only can take trade half around 100K or 200K. It is not that much for, I can say it's max to max as a retail trader. But for the hedge fund, for the big banks, for the big investor, they have billions of dollars. So for them to take any entry, they have to avoid a slippage. So wherever they are entering, they need some kind of liquidity. They need us for their move. Always think about this before taking trade. If you are a hedge fund, where are you going to be enter? You enter where the most of the retail traders are resting their stop losses. So always look for the liquidity. Always look for. If these if your POI has a sweep zone, that is good, because institution use that POI. But if not, then it has to create it on the right side. It has to be the sweep. After that real move happen. हाँ, remember that. ये चीज समझने को मुझे बहुत टाइम लग गया, because I always think about this like this way. There is a strong zone, there is a weak zone. Strong zone, weak zone. I know strong zone weak zone के बीच में ही fight होती है, but always when there is a strong zone, there is a liquidity. Simple. When there is a strong zone, there is a liquidity above or below. Simple. So वहां पर जब अगर किसी को हंट हो गया है, then we can go for trades. Otherwise, avoid any cost, avoid. हाँ, यहाँ पर I am looking, but remember this, guys. It is not, there is no lid here left side, so I need to be created to the right side. So I have to wait, or I might use M5 lid, but M5 is so far from here. So I need to see this to be created on the right side on M1. Otherwise, this become liquidity for me, and I become liquidity. You become liquidity that time. So now I have to close the session, because as you know, लैपटॉप पे करना, मैक पे करना लाइव सेशन, और फिर ये मेरा अपलोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. So I have to close now. So बाय गाइस, एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट. एंड हाँ, डिस्कॉर्ड में जैसे ही मेरे 100 मेंबर्स हो जाएंगे, करंटली 97 96 हैं, जैसे वो हो जाएंगे, आई विल स्टार्ट गिविंग यू द सिग्नल, अराउंड फ्री सिग्नल हियर. यहाँ पर मैं वो जो भी ट्रेड मैं ले रहा हूँगा, वो मैं ट्रेड यहाँ पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए. ठीक है. सो